Hello, good morning student. We start the chapter industries and today's topic is cotton textile. In ancient India, cotton textiles were produced with hand spinning and handloom sewing technique. After the 18th century, power looms come into use. Our traditional industries suffer a setback during the colonial period because they could not compare with the mill-made cloth from England. First successful textile mills was established in Mumbai in 1854. The two world wars were fought in Europe. India was a British colony. There was a demand for cloth in UK as they gave a boost to the development of cotton textile industry. As on 30 November 2011, there were 1946 cotton and human-made fiber textile mill in the country. About 80% of these are in private sector and rest in the public and cooperative. So apart from this, there are several thousand small factories with 4 to 10 looms. In the early year, the cotton textile industry was concentrated in the cotton growing belt of Maharashtra and Gujarat. Availability of raw cotton market transport include accessible port facility, labor, moist climate, etc. contributed towards its localization. The industry has close link with agriculture and provide living to farmers. Cotton boil pluckers and workers engage in gilding, spinning, weaving, dyeing, designing, packaging, tailoring, and sewing. The industry by creating demand support many other industries such as chemical and dye, packaging material and इंजीनियरिंग वर्क. इस तरीके से देखिए वैल्यू एडिशन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. While spinning continues to be centralized in Maharashtra, Gujarat and Tamil Nadu, weaving is highly decentralized to provide scope for incooperative traditional skill and design of weaving in cotton, silk, jari, embroidery, etc. India has world-class production is spinning but weaving supply low quality of fabric as it cannot use much of the high quality yarn produced in the country. Weaving is done by handloom, power loom and in mill. The handloom khadi provides large scale employment to weavers in their home as a cottage industry. India export yarn to Japan. Other importers of cotton goods from India are USA, UK, Russia, France, ईस्ट यूरोपियन कंट्री, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका एंड अफ्रीकन कंट्रीज. इस तरीके से देखिए कॉटन, वुलन एंड सिल्क इंडस्ट्री का डिस्ट्रीब्यूशन. अब देखिए इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट इंस्टॉल कैपेसिटी स्पिंडल इन द वर्ल्ड with 43.13 million spindle 2011-12 after China. Since the mid 80s, spinning sector has received a lot of attention. We have a large share in world trade of cotton yarn, accounting for 1/4 of the total trade. However, our trade in garment is only 4% of the world total. Our spinning mills are competitive at the global level and capable of using all the fiber we produce, weaving, knitting and processing, and it cannot use much of the high quality yarn that is produced in the country. There are some large and modern factories in this segment, but most of the production is in fragmented small units which cater to the local market. This mismatch is the major drawback for industry. As a result, many of our spinners export cotton yarn while garment manufacturers have to import fabric. Although we have made significant increase in the production good quality long staple cotton, the need to import is still fact. Power supply is erratic and machinery needs to be upgraded in weaving and processing sector in particular. Other problems are the low output of labor and still steep competition with the synthetic fiber industry.
इस तरीके से देखिए जो है हमारी कॉटन इंडस्ट्रीज़ का जो है अपन ने देखा। जूट टेक्सटाइल में देखिए इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड जूट गुड्स एंड स्टैंड एट सेकंड प्लेस एज इन द एक्सपोर्ट आफ्टर बांग्लादेश के बाद सेकंड नंबर पे। देयर वर अबाउट 80 जूट मिल्स इन इंडिया। मोस्ट ऑफ दिस आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल मेनली अलोंग विद बैंक ऑफ हुगली रिवर इन नैरो बेल्ट। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर their location in the Hooghly basin are proximity of the jute producing area, inexpensive water transport, supported by good network of railway, roadways। वहाँ पर अच्छी फैसिलिटी है इसलिए वहाँ पर क्या है प्रोडक्शन और जो है जूट का अच्छा है। एबिडेंट वाटर फॉर प्रोसेसिंग राज जूट, चीप लेबर फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड ज्वाइनिंग स्टेट ऑफ बिहार, उड़ीसा एंड यूपी। कोलकाता हैज़ अ लार्ज अर्बन सेंटर, प्रोवाइड बैंकिंग इंश्योरेंस भी वहाँ पर मिल रहा है, इसलिए जूट इंडस्ट्री वहाँ पर क्या है ज़्यादा है। इन 2010-11 जो जूट इंडस्ट्री वाज सपोर्टेड 3.7 लाख वर्कर डायरेक्टली, इतना सपोर्ट कर रही थी। इंगेज इन कल्टिवेशन ऑफ जूट एंड मेस्टा, मैनी मोर पीपल वर एसोसिएट डायरेक्टली। जो चैलेंज फेस कर रही है इंडस्ट्री वो क्या है? स्ट्रिंग कॉम्पिटिशन इन इंटरनेशनल मार्केट from synthetic substitute and from other competitors like Bangladesh, Brazil, Egypt and Thailand. However, the internal demands has been on the increase due to the government policy of mandatory use of jute packaging. To stimulate demand, the producer need to be diversified. 2005 National Jute Policy was formulated with the objective of increasing productivity, improving quality, ensuring good prices to the jute farmer and enhancing the yield per hectare. Main market are USA, Canada, Ghana, Saudi Arabia, UK, Australia. The growing global concern for environment friendly biodegradable material has been again opened the opportunity of jute production. इस तरीके से देखिए चैलेंजेस फेस कर रही है इस इंडस्ट्रीज़ ने। कंप्यूटर्स हैं बांग्लादेश और ब्राज़ील, इसकी वजह से फेस करा इसने चैलेंज, ठीक है। और जो है इसने नेशनल जूट पॉलिसी फॉर्मुलेट करी जिसका ऑब्जेक्टिव क्या था, जूट प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना, ठीक है स्टूडेंट। और फैक्टर जो है उसके हुगली बेसिन में रिस्पॉन्सिबल हैं, जो वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे, वाटरवेज की फैसिलिटी अच्छी है, इसके वहाँ पर प्रोडक्शन अच्छा है। फर्स्ट जूट मिल जो है वो सेटअप कहाँ हुई? कलकत्ता में, ठीक है। आफ्टर पार्टीशन इन 1947 द जूट मिल्स रिमेन इन इंडिया बट 3/4 ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरिया वेंट टू बांग्लादेश के पास चला गया था, ठीक है। इस तरीके से कल नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे शुगर इंडस्ट्री। थैंक यू।